Are you able to see the screen? Yes, please. Okay. So let me just shift it. So my topic is screencasting, and the objectives of the session is what is screencasting, benefits of screencasting, different software and apps used for screencasting, and how to use A-Power screencasting software. So today we will learn about only one app, that is A-Power screencasting software. It is easy to understand also. So what is screencasting? A screencast is a digital recording of computer screen output, also known as a video screen capture. So whatever I have made, suppose PowerPoint presentation, I can record that session. Or a screen recording often containing audio narration. Benefits of screencasting. So it is useful for online teaching, जो आजकल हम कर भी रहे हैं. So it is best for online teaching because teacher can pre-record the lessons. Screencasting gives students a combined audio visual learning because हमारे हर तरीके के बच्चे होते हैं. So it is the screencasting will give the audio presentation also and the visual presentation also. With the screencasting, students will become proactive because वो जब कर रहे खुद ही learn कर रहे होते हैं, they are becoming more active. They can watch the video, pause, replay the video whenever they want. कि suppose अगर early morning मैम की class मेरी miss हो गई and they want to see what is there, so we can share it and then they can see it any time of the day. लेस पेरेंट्स कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हम थक चुके हैं पेरेंट्स की कोऑर्डिनेशन ले लेकर, तो अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन भेजेंगे सो वी रिक्वायर लेस पेरेंट्स कोऑर्डिनेशन आल्सो बिकॉज चिल्ड्रन आर डूइंग सेल्फ स्टडी. So these are the different apps, free apps for the screencasting. A-Power software जो हम आज सीखेंगे, ice cream recorder, DU screen recorder, TechSmith. टेक्स्टस्मिथ में हमें एडिटिंग भी है, काफी डिटेल में जाकर है, बट द बेस्ट वन इज ए पावर बिकॉज इजीली अंडरस्टैंडेबल है, एंड ए टू जी स्क्रीन रिकॉर्डर. सो दिस इज द लिंक. अगर साथ के साथ आपको करना है, यू हैव टू कॉपी दिस लिंक एंड पेस्ट इट इन द वेब ब्राउजर, तो ऑटोमेटिकली वे वाली लिंक ओपन हो जाएगी ऑफ ए पावर सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर. How to download it? The first one is visit the link and click on free download for Windows button. तो हम वो वाली लिंक को कॉपी करेंगे and then we will put it in the web browser. Next is it will automatically ask कि आपको वो कहाँ पर सेव करना है. Then this some commands installer file will be open. आपको सारे documents को select the language, English language, and accept the agreement to install, जो हम हर installation से पहले करते हैं, accept the agreement. Then this screen will appear. इसको हम usually cross कर देते हैं because it is asking for login and sign up, because हम बिना login and sign up के भी we can रिकॉर्ड. बस एक डिफरेंस है, व्हेन वी विल लॉग इन तो वाटर मार्क नहीं आता. जो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उनका खुद का वाटर मार्क आता है. अदरवाइज अगर हम बिना लॉग इन के भी करते हैं, इट विल बी रिकॉर्डेड इजीली. सो दिस इज हाउ योर स्क्रीन विल अपीयर. दिस ब्लू फ्रेम जो है, जो थोड़ा सा ब्राइट नजर आ रहा है, दैट मीन्स दिस एरिया विल बी रिकॉर्डेड. इसको हम I will tell you, I will give you the hands-on also later on. So ये वाला जो blue area है, this will be only this bright part will be recorded. First button जो नीचे आपका एक tool bar बना हुआ आता है, this is the tool bar. In this the first option is recorder. That means यहाँ पर आप जब click करेंगे, then countdown will begin. 1, 2, 3, go. And then go करने के बाद it will give you a instruction that shall we start, and you have to accept it. उसके बाद automatically your recording will start. The second option, the second part in the toolbar is screen. That means you have to make a recording of your screen or the web camera. So basically we are doing the screen recording, so we will always click on screen part. Third is the audio part. That means कौन से ऑडियो में आपको यूज करना. आई सजेस्ट कि माइक्रोफोन ही करना चाहिए, बिकॉज बैकग्राउंड म्यूजिक जो है कभी कभी ना चाहते हुए भी इट विल अपीयर कि कोई डॉग बाग कर रहा है पीछे से, सिस्टम साउंड इफ यू आर यूजिंग.
So I basically want कि हर कोई microphone करे. If it is not available, then system sound is fine. And recording without audio can also be done. So उसमें हमें none के ऊपर click करना होगा. Here none option is also there. You can click on that. Next option is screen. आपको अगर full screen, you have to show the full screen of your record while recording. So this is the next option कि आपको full screen करनी है, और we can use this particular area. This part is of no use because अगर हम अपनी screen को this green option जो मैंने आपको लिख कर दिया, this we cannot change it because this green auto resize ये system अपने आप ही software करता है. Suppose मुझे अपनी screen को extend करना होगा, this custom and this size of the screen will automatically change. These two options are for paid members. So we are not the paid member. ये दोनों option paid members के लिए, in which they can do the editing also in the recording. Next one is, this is the most important part. These three dots. यहाँ पर option आता है options and help. Options में क्या आता है, I will show you while when we are doing hands on, और इसकी next slide में I will show you also कि options में क्या चीज आती है. Next one is, this is the minimize option, and this is to cross it कि अगर I have done my part, then I will cross it. So this is the thing which will come in the settings. जो आप 3 dots की मैंने बात करी थी, उसमें जब हम settings पर जाते हैं, 2 options will come, general and recording. I'll tell you both the option. Recording वाले part में you will see these things, basic and advanced. ये automatically it is done very nicely. जो भी part already selected है, this is the best video बनाने के लिए. But if only 2 parts I can change, the first one is the mouse style. Suppose मैं कुछ भी explain कर रही हूँ, suppose I'm making the recording of my PowerPoint presentation, और मैं चाहती हूँ कि मेरा mouse जहाँ पर भी click हो रहा है, suppose I want to show any step in my maths calculation. So if I'll click on this show hotspot, तो मेरा mouse जहाँ पर भी move हो रहा है, it will be seen. And next option होता है do not show. तो अगर मैं नहीं चाहती कि मेरा mouse का movement नजर आए, then I can put it on do not show hotspot also. Next जो मैं change कर सकती हूँ, that is the video format. There are many options in the video format, but the best one is MP4 because MP4 is compatible to all the recording, all the computer systems. Next comes your general settings. This is very important, general settings. यहाँ पर because जब हमने टूल बार देखा था, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, when to start का कोई बटन नहीं है, pause का कोई बटन नहीं है. So general settings में मुझे ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी, and while delivering any making any final recording, मुझे इसकी 1-2 मिनट की अपनी recording for practicing I have to do. So this is the first part, start recording. F1 is already इनबिल्ट. आप इसको चेंज कर सकते हो. F1 अगर सपोज करो मेरा लेफ्ट हैंड ज्यादा एक्टिव है और मुझे Q वाले को क्लिक करना है, देन आई विल गो हेयर, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन आएगा in which many options are given. F1 से F12 तक के options given होते हैं, then A to Z तक के options given होते हैं. So if I want कि मुझे start recording के लिए F1 hotkey नहीं चाहिए, मुझे Q hotkey चाहिए, I'll put my cursor on this start recording, then I will go here. तो A, there will be a drop down, उसमें से मैं जो भी part मुझे select करना है, जो भी button मुझे select करना है, I will do that. Next is stop recording. F4 already है, I want to change it, I can go there and I will drop down में मैं अपना change कर लूँगी. Including you can see that there is 3 more buttons over here, control, shift and alt. अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा और safety हो, तो मैं I'll put this cursor on control. तो उसके साथ क्या होगा, मेरी ये starting hotkey में I have to click on control and F1 both. मैं चाहती हूँ मेरी 3 hotkey 3 buttons press करने पे recording start हो, then मैं shift को भी कर देती हूँ, then it will be the option like control plus shift plus F1. That means मुझे तीनों keys को एक साथ press करना होगा, then it will start recording. 4 part करना है, then alt का भी हम option कर सकते हैं, but it is easier कि हम सिर्फ F1 पे ही रहें, because F1 click करना easy रहता है, फटाफट start कर दिया and फटाफट stop कर दिया. So this is my toolbar.
अगर आपको चेंज करना है, यू कैन डू इट इन योर स्टाइल, जो भी आपका हैंड एक्टिव रहता है दैट टाइम. Next thing is default output directory. This is where you want कि, क्योंकि वहां पर when you will done with your recording, it will not give the option कि आपको सेव कहाँ पर करना है. जहां पर आपने ये पार्ट लिखा है, it will automatically go there. कोई सेविंग का ऑप्शन नहीं है. इफ यू हैव डन द रिकॉर्डिंग, अगर आपने स्टॉप का रिकॉर्डिंग का, दैट मीन्स F4 बटन को क्लिक कर दिया है, इट विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, इट विल ऑटोमेटिकली गो देयर. But yes, there is one more option जिसमें it will say that you want to upload it on the YouTube directly, or there are many options जहाँ पर अगर upload करना है आपको, so it will, you have to do, then go to that key then. So thank you. This is the presentation. If you want to do the hands-on, let us start the hands-on. So this is the my A-power free screen recorder जो मेरे desktop पे saved है. So this will come, that means it is asking for login. If I don't want to log in because watermark ही का ही option है. So as you can see, this blue mark, this is the brighter part जो नजर आ रहा है, this will be recorded. आप देखिए जो मैंने बात करी थी custom, this is the size screen, ये है size screen. If I will मूव दिस कर्सर, तो ऑटोमेटिकली ये साइज स्क्रीन बढ़ रहा है. इफ आई वांट कि मुझे फुल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग चाहिए, देन आई विल गो टू हियर फुल स्क्रीन. इट विल बी, द होल स्क्रीन विल बी रिकॉर्डेड नाउ. अगेन मैं यहाँ से स्टार्ट कर दी हूँ. द फर्स्ट बटन इज द रिकॉर्डिंग बटन. Here I will F1 की फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी because automatically it will start recording from recording button. Then this key is coming. Screen को record करना है या web camera को record करना है. It will give two option. Usually we are doing the screen recording, so it will always be on the screen recording. The next option is the which sound system you want to use. System sound, microphone, system sound and microphone, or no, nothing you want, don't want any audio recording, just the video recording, then you will put on none. Next is for the full screen or the this part only, then it will be done then. Next is custom and the screen size. This will be done automatically. We don't have to change it. These two options are for the paid members, so we are not supposed to use these two options. This is the main part for the screen recording. We will go to the option. Now there are two types of options are coming, recording and the general. Recording में हम सिर्फ two things I can change, that is mouse style. If I want my mouse to be moved here and there, then I will select show hotspot. And if I don't want this mouse movement, then I'll click on hide hotspot. So right now I want show hotspot, so I'm choosing show hotspot. The next thing which I can change is the video format. So MP4, WMV, AVI, anything you can opt, but as told that MP4 is compatible to all the systems, so I usually do MP4 selection. Next comes your general settings. These settings, these are the hot keys जो आपको recording के time पर खुद को भी ध्यान में रखना है, that these are the hot keys which I have selected. So while recording, I will start on F1. F1 usually हमें नहीं चाहिए होता because when I'll start the recording, then automatically it will countdown will become 3, 2, 1 and it will start automatically doing the recording. Next comes your, suppose मुझे change करना है, F1 नहीं चाहिए मुझे command, I want कि मुझे ज़्यादा safety चाहिए क्योंकि कोई बच्चा आकर F1 ना click कर दे, then I have selected Control plus F1. So इधर मेरी command change हो गई, then I will click on Control and F1 together and then it will start the recording. अगर मुझे 3 buttons चाहिए एक साथ click करने के लिए, for more safety, Control plus Shift plus F1. Alt भी साथ में select हो सकता है, so it is up to you. I have made it shorter कि मैं सिर्फ F1 को click करूँ and it will start recording. In the same way, हर कोई short hotkey you can change it. Suppose इसको मैं F1 को change कर रही हूँ, so these are the drop down. यहाँ पर आप select कर सकते हो कि आपको कहाँ से कौन सा पार्ट चूज करना है, वॉट एवर योर हैंड इज एक्टिव, अल्फाबेट चूज करने हैं या फिर F1 F2 चूज करना है. सो यू कैन डू द रिकॉर्डिंग एज इट इज.
So right now this is my hotkey जो मुझे याद है. So F1 for start recording, F4 for stop recording, F2 सपोज कोई मुझे पानी पीना है या पीछे से डॉग हैज स्टार्टेड बार्किंग, तो मुझे मैं आई विल पॉज इट द माय ऑडियो, एंड देन आफ्टर एवरीथिंग इज डन देन आई विल अगेन प्रेस ऑन F2, तो मेरा रिज्यूम हो जाएगी वापस रिकॉर्डिंग. F3 is for show height recording toolbar. While recording आप ये देख रहे हो, this is the toolbar. I don't want कि ये toolbar नजर आए, so I will click on this F3 button. Automatically ये जो toolbar है वो मेरा hide हो जाएगा. So this is in the recording and the general part. Next is your for minimizing the screen. अगर अभी मुझे नहीं चाहिए, I will minimize my screen, and this is for closing the screen. So suppose if I want to start the recording, मैंने अपना ये वाले size को रखा और I will making it a full screen. तो ये पूरा screen की recording होगी. मुझे अगर PowerPoint presentation कोई present करना है, so let me click on PowerPoint presentation. Anyone? Mm. So this complete screen will be recorded. So let us start one example. I'll click on recording. That means the F1 button. I'll start clicking on recording. This will again tell me that watermark मुझे नजर आएगा. Your microphone is on. Now these are the hotkeys which I have selected. कि मुझे pause करना, I will click on F2. Stop करना है, then I will click on F4, and I have to hide the toolbar. I will click on F3. मुझे याद है ये, then I'll say okay. Countdown has begun. See, first of all, I'm hiding my toolbar. F3 जो मेरी की थी. Now it has started recording. मैं next करूंगी slide. So this will all the recording making of multiplication flower, how to make the multiplication flower. I will give the instructions simultaneously while shifting. Draw a circle, draw 10 petals. This is step 3. Done. Step 5. I want to pause. I have clicked on F3. F3 हो गया. Then I want to resume it again. F3 again. So next slide. Thank you. So this is how I have stopped my F4. मैंने click कर दिया. It has stopped. So this is how it is started recording. So here is the option. So see, I have opted कि मेरा जो part है वो जो भी whatever I have saved, it will go on the. So here it will come A Power Soft Videos. So here the recording has been come. So I'm closing everything. So this is A Power Soft Screen Recorder.